आज हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रीम करेंगे और आज के स्ट्रीम में बेसिकली एटलीस्ट 164 frames drop due to an unstable network. The audio sync with and hey, what happened यार? What happened? The frame is dropping यार. The frame is dropping. भाई frame drop हो रहा है भाई मेरा. Let me just अबे यार. Hmm, hmm, एक बार जरा आवाज सुनो. चलो भाई मतलब सही सब सही चल रहा है बेसिकली. तो बात क्या है अभी हम लोग को स्टार्ट हो चुका है एंड या ये मेरा एक्चुअल टेस्ट इधर होने वाला है. कोई मेल आ गया था इस रिगार्डिंग 45 मिनट्स का होने वाला है. 17 MCQs होने वाले, एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होने वाला है. हाइपर अर्थ ने एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड की कि वो लोग ने एक सैम्पल टेस्ट दे दिया था. तो ये सैम्पल टेस्ट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे. डायरेक्टली हम लोग चालू करें बिकॉज ज़्यादा फालतू चीज़ें करना नहीं है. 11:20 हो रहा है हमारा. एक 5 के अराउंड खत्म होगा. हम लोग 1:15 के अराउंड विल डू, बट हम लोग वो चीज़ ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे. हम लोग 1:15 तक विल परफॉर्म दिस, विल डू दिस व्यू एंड देन ऑलराइट. नाउ लेट्स गो. This is an assessment. Please choose the problem statement to begin with. Strive to solve any as many possible problems. A is the brother of B and K. D is the mother of B. A is the brother of B and K and D is the mother of B and E is the father of A. The children is not definitely true. Alice is my father. Father's youngest sister. Wait, ये क्या है? What यार? Select your answers to the A is the brother of B and K and D is the brother of which of the following is not true? A is the son of D. A is the son of D. Mm, A is the father of K. Next question पे कैसे जाएंगे? Next question. Alice is my father's youngest sister's father. Alice is my father's younger sister's father's only daughter's cousin, daughter-in-law. How does Alice address me? अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो भाई? अलाइस इज माई फादर्स यंगर. मेरे पापा की सबसे यंगर सिस्टर फादर्स ओनली डॉटर्स कजन. भाई ये क्या है भी क्वेश्चन? हाउ डज अलाइस एड्रेस मी? अलाइस भाई ये क्या है ब्रो? ओनली डॉटर्स फादर्स younger sister's father. Younger sister, my father's younger sister's father's only daughter's cousin.
भाई ये क्वेश्चन क्या हुआ ये? Alice is my father's younger sister's father's only daughter's cousin, daughter-in-law. Now, how does Alice address me? ये तो तुक्का ही मारना पड़ रहा है इस सबसे। Number of likes and dislikes. Your friend and you made a top of topics. हाँ? ये क्या है? Number of likes and dislikes. Your friend and you made a list of topics and both of them voted if they like or dislike the topic. They wrote 0 to denote dislike and 1 to denote like. The first line code contains the string A denoting Bob's like and dislikes. The second line contains the string P denotes Ali's likes and dislikes. Output. Print the number of topics both Bob and Ali's like or change both A and B. Simple input. Simple output. 0, 1, 0. 3, 3. They ask you to count the number of topics that both like or both dislike. Both liked 1, 2, 3. Count like dislike. अबे सी में क्यों है ब्रो ये मुझे सी प्लस प्लस में चाहिए एम्बुलेंस में नीड ओडो गदा तेरे चली ओड़ी है गुंगरू ये डे रोड 02 स्ट्रिंग में गया है सिंपल इनपुट दिस so for integer m equals to m equals to a dot length length equals to e dot length. Integer m at length. Alright. So for integer I equals to 0, I less than m.
भाई अब क्या करना है, मैक्स स्कोर फॉर दिस प्रॉब्लम स्टोरी स्कोर। अबे बट अब क्या करना है मेरे को? ऑल डन। अब बाकी किधर मिलेंगे मेरे को? बाकी क्वेश्चन भाई, वेयर डू वी गेट दी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैन? रिव्यू भाई हो गया क्या? ये तीन ही क्वेश्चन है। एंड बेस्ट भाई व्हाट वाज दैट यार? आई जस्ट मेरे को समझना ही नहीं कुछ। अबे इससे अच्छे तो जमना ढूंढूंगी भाई। अबे यार मैंने एक अच्छा टेस्ट बना के दिया। अबे फ्रेम ड्रॉप हो रहा है यार एक्चुअली में मेरा अभी। फ्रेम क्यों ड्रॉप हो रहा है इतना ज़्यादा? ये इशू मिलेगा भाई मेरे को इशू मिल रहा है मतलब। अबे एक सेकंड मेरा आउटलुक में देखो। आज का नहीं कल का ही इसमें इसमें मैंने डाला था यार। ये आज का भी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा मुझे। यार मेरा ये लैग हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा। हट ठीक है। बहुत ज़्यादा ही लैग हो रहा है भाई अभी फिलहाल। एम्बुलेंस नहीं रोक चलो कोई व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर? चलो भाई यही आंसर देंगे। यही करते भाई एम्बुलेंस। What is data structure? Programming like a collection of algorithms used to store and organize data. Type of a C. C answer. Uh, what are the disadvantages of arrays? Index value of an array elements are sequentially accessed. Data structure like QA stack cannot be implemented. The chances of wastage of memory space if elements in an array are lesser than the size. D. मुझे तो डी लग रहा है, अब पता नहीं। देख रहे हो नीचे भी नहीं जा रहा है यार। क्या ब्यूटी है ये। लैग हो रहा है। देख रहे हो बाप रे बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा। एक सेकंड यार फ्रेम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। क्या पता फ्रेम इतना जो ड्रॉप हो रहा है यार, ये इशू है भाई, इतना ड्रॉप नहीं होना चाहिए। डी हाँ। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्जन? स्टार्ट ए। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ बैलेंस parenthesis is स्टार्ट B. Which of the following is not the application of stack? Data transfer between two asynchronous processes, compiler syntax analysis, tracking of local variables at runtime, a parenthesis balancing program, tracking of local variables at runtime, compiler syntax analyzer. इसका मतलब क्या होगा? तो ये चीज़ नहीं समझ रहा है। डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू asynchronous operation. What is asynchronous? Let me just search it. Asynchronous, not existing operating at the same time. Asynchronous operations between two data transfer between two asynchronous. Stack. Data transfer between two asynchronous processes. Compiler syntax analyzer. Data transfer between two asynchronous processes.
स्टैक पे हो सकता है क्या ये चीज़, डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू asynchronous process, मतलब they are not working simultaneously and the data needs to be transferred. Yes, we can perform this. Tracking of local variables at runtime. Compiler syntax C मेरे हिसाब से C या B में से आंसर होगा. A, data transfer. The rest are all stack applications run by tracking of local variables at runtime, compiler syntax analyzer. Also called a parser, is the second phase of compiler coming after lexical analysis. Its main job to check whether the sequence of tokens produced by the lexical analysis follows the grammar rule for the syntax and token stream from the lexical language program will be defined in BNI for CA. Tracking of local variables at runtime in stack application. When a program runs, especially in languages like Java or C, the runtime stack, also called the stall stack, is used to keep track of method calls and their local variables. A runtime stack. Every time a set function method is called, the system creates a stack frame, also called as an activation record on the top of the runtime stack. This frame, okay, so it's kind of in a way कि मतलब हम लोग जब recursion भी अगर हम लोग तो stack create करता है वो, तो local variables को वो store करता ही है उधर, मतलब okay, it's kind of that. Okay, I understood this. Which data structure? अरे infix to postfix में I just forget यार, infix to postfix के लिए मेरे हिसाब से Infix and postfix explain यार, infix and postfix, infix and postfix and postfix explain यार, मैं भूल गया somehow but वो याद हो गए, मैं कैच हो गए, मिल जाए तो मैं पूरा ऑपरेट्स का रिटर्न बिटवीन ऑपरेंड्स. postfix is ऑपरेंड्स बाद में लिखा जाता है और written after operands. Operators are written after operands. Operators are written between operands. मतलब ऑपरेटर की infix to postfix के लिए which is stack. Of this postfix expression. Alright, so this would be in a way कि 9 minus 2 7 7 into 4 28 18 16 20 alright, plus minus into plus 9 minus 2 7 7 into 4 28 6 into 3 3 minus
of 3 minus of 2 plus 4. 3 minus 2, 16, 16 plus 4. एम्बुलेंस नहीं रोक रोक चलो ये भी अच्छी चीज सीख लियो. What data structure would you mostly like seeing in non-recursive implementation of a classified problem? काफी recursive algorithm, the order in which the recursive process comes back in reverse or in which goes forward in which of the following statement about stack data structure is top of the stack always contains the new node. Stack is the P4 data structure. B the LIFO last in. नहीं first in first out. Last in first out. Yes. ये LIFO follow data structure. Null link is present in the last node of the bottom of the stack. Linked are used for implementing stacks. Top of the stack always contains the new node. Contain the new node. Null link is present in the last node at the bottom of the stack. Hmm. The radius required for breadth first traversal on a graph is BFT breadth first traversal के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं so required breadth BF is breadth first search level order Q D. Yes, starting vertex first taken and adjacent vertex and visit area. Alright, the prefix form of a minus b prefix. The answer over a Infix this can be written as prefix expression is which of the following points are not true about linked list data structure when it is compared with an array. Random access is not allowed in a typical implementation of linked list. A. True. Okay, sorry. Access of elements in a linked list takes less time than they compared to arrays. Which data structure is based on the last in first out? Fact. Which of the following application uses of a circular linked list? Because undo operation in text editor. Allocating which of the following operation application makes user circle implementing vertical allocating CPU resources. Implement hash tables. See, implement hash tables actually use a single linked list. Recursive function calls uses circular linked list. B or D is also. Generally, round robin fashion is employed to allocate CPU time to resources, which makes users simpler. Oh yeah, no yeah. Recursive function calls uses stack data structure and operation table uses a linked list. Hash table uses single linked list. Yes. What is a bit array? A data structure that completely shows bits. Okay. Which of the following tree data structure is not a balanced binary tree? AVL tree is self-balancing tree. Red black tree, B tree, ये तो तीन tree के बारे में I don't have the understanding bro. All the three data structures given an option to balance, but B tree can have more than two trees.
B tree is actually binary tree, right? I don't know. So which of the following is not the type of queue? Single-ended ordinary queue, circular queue. Which of the following data structures can be used for parenthesis matching? Which algorithm is used in the top three data structure? Backtracking type or die. Which algorithm is used in the top three data structure? Run, divide, and conquer. B. Mm. What is the need of a circular queue? Easier computation, incrementally for effective usage of memory to delete elements based on priority. Effective usage of memory A or C. Yes. In a linear queue, DQ operations causes the starting element of the array to be empty and there is no variable. That space priority to distribute the elements based on the priority. Which of the following is the most widely used external memory data structure? Which of the following is also known as a row? ये नहीं पता मेरे को equation. In external, the data is transferred in form of blocks. Is blocks a row data structure? A row data structure means what? C. A. Which of the following data structure can provide efficient searching of the elements? Unordered list. List क्या होता है? यार मैं भूल गया ये चीज़ है. Stacking यूज़ टू स्टैक नहीं यूज़ करते. Heap तो नहीं यूज़ करते शायद हम लोग. Let's try that one time. Cover up. What is the use of the being data structure to have efficient? अब जैसे ये वाला जो मेरा टावर ऑफ ने इससे मेरे को बता रहा है. Let me just show you. अगर लॉग आउट नहीं हुआ ना चाहिए वैसे नहीं चाहिए. अरे यार लॉग आउट हो गया. I should have shown you but ठीक है अभी लॉग आउट हो रहा है. What being data structure? What are most appropriate data structure for use in the world? Of word. Stack is the most appropriate for reversing the word. The stack follows. Oh yes, man. I will just forget. Yeah. What is the functionality of the following piece of the code? Just read the list. Which of the following? So I think so. I've practiced enough, and now
Mostly I would just continue with my this uh, take, take an exam. 326. In a C plus, if an array is declared as integer array at the global scope, what is the primary risk of using deep recursion without a proper base case or on a very large input sizes? Infinite loop that doesn't consume memory, stack overflow, memory leak, segmentation fault due to heap exhaustion. नहीं यार heap का तो कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा हम लोग stack यूज कर रहे हैं stack overflow हो सकता है क्योंकि stack overflow होगा एक्चुअली बस heap required because वो हम लोग heap डालते हैं तभी वो एक constraint देता है what is the time complexity of accessing an element and तो स्ट्रीम चल रहा है ना what is the time complexity of an accessing an element at index I. What is the time complexity of accessing an element index I in the standard C++ array? Accessing the element is अरे यार हम लोग random access कर सकते हैं यार shit man shit I just this was a huge blunder भाई हम लोग random access array में perform करते हैं it's not a queue man list में भी कर सकते हैं consider the following recursive function 5 4 3 2 1 0 2 तक ही जाएंगे 5 4 3 2 5 4 9 12 14 14 plus 1 15 6 9 most 9 10 according to me yes which of the following is true about tail recursion the recursive call is the last statement executed by the function एक हेड ऑन रिकर्जन होता है जहाँ पे हम लोग टेल रिकर्जन क्या होता है शायद तीन स्टेटमेंट बाद में आता है It's slower than the normal recursion. It cannot be implemented in C++. It requires more stack space than this is not the last state, yeah. Or the recursive call is the
last statement executed by the function. Until there is no further work is done after the recursive call returns always that. Okay, so this call is actually okay. The tail. How many times is the function I've called, including the initial call for F3? Void F3. How much time they have called it? How much time they have called it? 1, 5, 4, 4 F3, 3, 2, 1, 0 पे तो रिटर्न ही कर रहा है 0 3 2 1 फिर 6 times mostly 6 times yes. Because obviously वो execute हुआ है आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए मतलब obviously 0 से 9 चलता है तो इससे तो 10 को भी दी random access so 10 तक तो हम लोग random access perform ही नहीं कर सकते हैं so वही है which recurrence relation represents the time complexity of a binary search on an array binary search on an array on an array binary search on an array hmm. Hmm. इन दोनों में से कोई आंसर है इतना तो फॉर श्योर है टाइम कितना लेता है लॉग इन लेता है ना लॉग इन किसका आंसर बन के आएगा 2 डिवाइड फंक्शन में 2 है ना so 1 this is 4 so n of 0 0 is the k value so k is less than this alright so it is C so is the yes what is the time complexity of a recursion function that calculates factorial of अभी ये मैंने चीज़ कहाँ से की वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कल आपको एक चीज़ समझा रहा था ये वाला ईमेल कहाँ गया k की वैल्यू 0 हो गई थी log 1 रेज़ टू 2 इज एक्चुअली 0 सो यहाँ पे fn हमारा 1 है तो log n हो गया और वही बेसिकली हमें वो करना भी लॉग इन ही लगेगा क्योंकि हमारा बाइनरी सर्च होगा और बाइनरी सर्च को इस तरीके से आप ले लो कि वो ट्री स्ट्रक्चर बनाता है ट्री स्ट्रक्चर हमेशा लॉग इन लेता है
कहा था तो मेरे को क्लैरिटी वहाँ से आ गई, और जैसे वो क्लैरिटी आई तो मैं समझ गया कि ये मड सॉर्ट जैसा मैं समझ गया। मड सॉर्ट भी वो log एफ एन ये कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, डिवाइड करता है, तो वही चीज़ आपको भी इसमें दिमाग में लगानी थी। यहाँ पे हम लोग कर नहीं सकते थे वहाँ पे, बिकॉज एन का वैल्यू वन है, विच इज़ इवेंचुअली के की वैल्यू बड़ी हो गई हमारी इस वैल्यू से, तो वहाँ पे देखो आंसर ये हो जाएगा ये वाला, जहाँ पर डी ऑफ एन इज एक्चुअली एफ ऑफ एन, सो एन की वैल्यू, सो वो चीज़ होगी नहीं। बाइनरी सर्च में लॉग एन आई इज एब्सोल्युटली समथिंग जो कि रिक्वायर्ड है। सो विच what is the space complexity of a recursive function that calculates factorial of n o of n depth? Space complexity find out, and we have to find out the space complexity. Hmm, okay. मेरे हिसाब से तो o of n वो नहीं रहेगा। If you pass an array to the function in C++, what is actually passed? A reference to the object, a size of the array, a copy of the entire array pointed to the first element. Which of this is the most efficient way to reverse an array of this, sorting the array and iterative creating a second array using a function that swaps, creating the array and filling in backwards, and iteratively in entity array interim always the element of matrix is stored in a memory relative to matrix, this assuming row major order. In 2D array matrix 3 or 4, how is the element of this is the matrix, and how is the element at matrix 1 2 stored in a memory relative to, तो मोस्टली मेरा हो गया अभी। वैसे मैं मॉर्निंग में भी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुका था, तो अभी के लिए मेरा यही रहेगा। तो ये भी मेरा माइंड ज़्यादा, अभी मेरे को टेस्ट देना भी है तुरंत, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई थिंक सो आई हैव प्रिपेयर्ड इनफ फॉर दी बी कोड। में कल रात को भी क्वेश्चन में सॉल्व किया था और बाकी सब किया था। मैं कल आने वाला था स्ट्रीम पर दिखाने वाले, बट फॉर सम रीज़न मेरा मन भी नहीं किया, और थोड़ा सा मेरे को वो भी नहीं आ रहा था कि मेरे को स्ट्रीम पे, बिकॉज स्ट्रीम पे कैसा ना, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू, सो मैं अपना प्रॉपर्ली उस तरीके से यू कैन नॉट यूटिलाइज योर ब्रेन, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि सामने वाले को बंदे को भी जो भी है मेरी स्ट्रीम अगर नहीं भी देख रहा है या देख भी रहा है, तो उसको एक्चुअली मैं इन फ्यूचर और सम और द अदर वे दे नीड्स टू हैव द क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट इज। सो वो चीज़ों के लिए ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, और उस चीज़ के लिए इसीलिए अवॉइड किया मैंने कल रात को स्ट्रीम, बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक बार स्ट्रीम कर चुका है पूरे दिन में, 1.5 घंटे का मैंने ऑलरेडी कर चुका था। और अभी तो बिग कोड का मैं, अभी कितना बज रहा है, अभी हम लोग का 12 बज रहा है, तो मैं अराउंड 12:30 के अराउंड में टेस्ट कंटिन्यू करूँगा, फिर मैं 1:15 के अराउंड में आपको 1:15 का अराउंड स्ट्रीम तो नहीं करते हुए दिखूंगा, बट फिर उसके बाद तो हम लोग जो टाइम टेबल अभी हम लोग बनाए रहेंगे उस हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं अपना रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट से पहले तो हम लोग जी सॉक का देखेंगे कि जी सॉक को हम लोग बहुत ज़्यादा, जी सॉक के लिए हम लोग बहुत लाइटली ले चुके हैं। जैमिना को वही पूछूंगा मैं, वो सब चीज़ें मैं देखूंगा कि इज़ राइट नाउ इज़ वी आर नॉट लेड इनफ कि हम लोग ये सब चीज़ों में ज़्यादा अच्छी तरीके से वो चीज़ कर पाए, मतलब जी सॉक में पार्टिसिपेट करें और उसमें अच्छा परफॉर्म कर लिए। तो वही चीज़ मेरे को भी देखना है। और सेकेंडली खैर हम लोग ने ये स्ट्रीम में एक्चुअली में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड इट। और yesterday we did 3 lit code questions regarding the prefix sum approach, because वो जो हम लोग ने डाला था प्रॉम्प्ट तो उसमें भी कोड शायद प्रीफिक्स का सम ऑफ 2 पॉइंटर्स और स्लाइडिंग विंडो के अप्रोच ज़्यादा पूछते हैं रिलेटेड, तो उसकी हम लोग को इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है। हम लोग ने कल भी एक रिवीजन रात को मैंने दे दिया था 2 पॉइंटर्स और ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग एक दो बार मैंने अपने एंटी ग्रेविटी पे जो भी मैं अपने नोट्स बनाता हूँ मतलब अपने गिटहब पे, तो वो सब मैंने शो ऑलरेडी रिवाइज एक बार कर चुके हैं। कहाँ पे गया,
तो वही अभी दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रीम सो एवरीवन गुड बाय। मिलते हैं मतलब कल मिलेंगे अभी और कल अपडेट में आपको देता हूँ किस लेवल के क्वेश्चंस है और क्या क्या क्वेश्चंस हमें कुछ भी क्वेश्चंस अच्छे दिखेंगे आई वुड जस्ट क्लिक अ फोटो ऑफ इट एंड जस्ट वुड खैर वो चीज़ अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे बट शायद कैमरा वैमरा कुछ वो लोग अपनी वो जो भी रहता है अभी टेस्ट ऑनलाइन रखे हैं तो उस हिसाब से वो लोग सिक्योरिटी भी था कि बंदा कॉपी ना करे बट वो सब चीज़ें देखा जाएगा बट दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रीम सो everyone goodbye and body update is actually not up to the mark because हम लोग चीन जा नहीं रहे